Okay, so students, today's topic is list. Okay, before going to list, in every language we have data type. Data type represents the type of data. Okay, so Python supports three special kind of data type. Okay, so data type in Python, Python data types. Okay, तो बेसिकली पाइथन डाटा टाइप तीन टाइप के हैं. एक है लिस्ट. ओके, जिसमें आप कलेक्शन ऑफ डेटा रखते हो. मतलब लिस्ट ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत सारे वैल्यू को स्टोर करता है. एक नहीं, बहुत सारे वैल्यू को स्टोर करता है. ठीक है, और आप उन सब वैल्यूज के साथ कुछ ना कुछ ऑपरेशन कर सकते हो, बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हो. राइट. हम सी प्लस प्लस जावा में पढ़े थे एरे. एरे में क्या होता है, एक वेरिएबल होता है, एक वेरिएबल में आप कितना भी वैल्यू रख सकते हो. दिस इज वेरी मच सिमिलर इन लिस्ट. ओके, सो लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं. किसी भी लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं. ठीक है. ओके, लिस्ट के बाद आपका पास आ जाता है टपल. ठीक है, तो ये एक ऐसा डाटा टाइप है जो कि इम्यूटेबल है. मतलब आप कभी भी कोई टपल बना लो तो वो चेंज नहीं होगा. इट इज फिक्स्ड. ठीक है, तो टपल इज समथिंग विच इज फिक्स्ड. ओके, राइट. तो टपल जो डाटा टाइप है इसको ऐसा कॉमन ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया जाता है. कॉमन ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज होते हैं, कॉमा सेपरेटेड, और उनको आप क्या करते हो, ये होता है इम्यूटेबल. मतलब टपल में एक चीज डाटा चला गया तो आप उसको क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, तो ऐसा कौन सा सिचुएशन है रियल वर्ल्ड में, अगर ले ले एग्जाम्पल, तो टपल कहाँ यूज होता है. ठीक है, मान लो आपका एग्जाम हो गया. राइट. एग्जाम होने के बाद आपका क्या हो गया, आपको मार्क्स मिल गए. तो मार्क्स मिलने के बाद अगर हम लिस्ट में रिकॉर्ड सबमिट करें, हेलो सर। हेलो। कल को लिस्ट में चेंजेस हो सकता है. हेलो। हाँ आर्यन. सर्विस स्टार्ट करଥିଲି ତ हाँ हाँ हाँ. ଗୋଟେ ମେଲ୍ କରିଥିଲି ତ ସରି। हाँ. ନା ବାପାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେଲ୍ କରୁଥିଲି ତ ସେଇପାଇଁ ଦେଖିନଥିଲି सर। ओके ओके, हो. तो इमेजिन करो तुम लोग, ଦେଖିଲି। इमेजिन करो तुम लोग के पास क्या है कि एग्जाम का मार्क्स, वंस अपडेट हो गया. ओके, एग्जाम का मार्क्स डाटाबेस में अगर अपडेट कर देते हो. ठीक है, तो जो वैल्यू चढ़ गया उसको बार बार हम चेंज करते हैं. जो एग्जाम आप दे चुके हो अदिति, आपने एक एग्जाम दे दिया, आपको उसका मार्क भी मिल गया, क्या आप बाद में उसको चेंज कर सकते हो. सर किसमें? आपने अभी एक एग्जाम दे दिया है. ठीक है, आपका सेमिस्टर हम्म। 1 सेमिस्टर 2 खत्म. हम्म। तो भी आपने एग्जाम दे चुका है. राइट. अब उसमें जो मार्क मिले थे उनको आप चेंज कर सकते हो, नहीं सर। वापस नहीं जा सकते. ठीक है, कॉलेज वाले भी मना करेंगे, नहीं नहीं, नहीं चेंज कर सकते. राइट. तो हम्म। टपल वैसा ही डेटा सेट है. टपल क्या करता है, टपल में आप जो भी डाटा डालोगे वो ये कोशिश करेगा कि वो इम्यूटेबल रहे. इम्यूटेबल मतलब आप उसको डाटा को चेंज नहीं कर सकते. एक बार जो टपल बना दिया सो बना दिया. ठीक है. ओके, तो लिस्ट, टपल, देन देर इज समथिंग कॉल्ड डिक्शनरी. ओके, तो डिक्शनरी होता है तुम्हारा की वैल्यू पेयर. की वैल्यू पेयर. ठीक है. ओके, तो जिस तरह हम लोग एक डिक्शनरी ले लेते हैं. डिक्शनरी में क्या होता है, देयर इज अ वर्ड, उस वर्ड के रिलेटेड देर आर मेनी अदर वर्ड्स विच रिप्रेजेंट द सेम मीनिंग.
These are called synonyms, है ना? ठीक है, ओके। तो डिक्शनरी में वैसा ही है, एक की है और उस की के लिए एक वैल्यू है, ठीक है। तुम जहां भी वो की को यूज करोगे वहां पे वो वैल्यू ऑटोमेटिकली चढ़ जाएगा, ठीक है, ओके। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड सेट, ओके। तो सेट एक ऐसा चीज है जहां पे आप डुप्लीकेट नहीं रख सकते, ठीक है, ठीक। तो ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ओके। तो आज हमारा टॉपिक है लिस्ट। लिस्ट टाइप। तो लिस्ट बनाने के लिए सबसे सिंपल सा चीज क्या है, एक वेरिएबल ले लो। वेरिएबल लेने के बाद जस्ट पुट द स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट देने के बाद आप यहाँ पे numbers of value you can put, then add the square bracket, okay. So this is very much similar to array, okay। तो ये आपने लिस्ट बना दिया, राइट। अब लिस्ट में जो ऑब्जेक्ट्स हैं, लिस्ट में जो वैल्यूज हैं, उनको एक्सेस करना है, लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। मान लो मुझे, मैं अगर, देखो, मैं अगर सिंपली अगर प्रिंट करूं, प्रिंट एल, so this will give me the output like this: 10, 7, 80, 36, okay। अगर मैं इंडिविजुअल एलिमेंट प्रिंट करना चाहूँ, आई वांट टू एक्सेस इंडिविजुअल एलिमेंट, तो आई विल हैव टू यूज द इंडेक्स नंबर, मुझे इंडेक्स नंबर यूज करना पड़ेगा। तो लिस्ट में जितने भी एलिमेंट है अरे की तरह, उनका इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है। सो व्हेन आई एम राइटिंग L0, इट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग दिस 10, okay। If I'm writing L3, so this is representing 36, ठीक है, 0, 1, 2, 3, okay। क्लियर तमन्ना, okay। So what we learned, to access the individual list element, okay, we need the index number of the element, okay। तो इंडेक्स नंबर को कहाँ पे लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। when you do that, you get the element from the list, right? Okay, now, so by this way you can collect the list, right? Now, so iterating through a list, if we want to automate the accessibility of the list elements, or if we want to iterate, okay, through the list element, okay, you need to use for loop. So there are two kinds of iteration। तो यूजिंग रेंज यूज करके कर सकते हो। तो रेंज में क्या करोगे, इंडेक्स नंबर मिलेगा तुमको, ठीक है। तो सपोज इन एल आई हैव दिस, ओके, 10, 15, 3, 7, 28, so these are the numbers in the list, okay। I want to iterate through the list, so I'll simply write for I in range, length of L, ठीक है। L का लेंथ क्या है, जितने भी एलिमेंट है अंदर में 5 एलिमेंट है, तो लेंथ हो गया 5, ठीक है। एंड व्हेन आई एम यूजिंग रेंज, दैट मीन्स इट इज टेलिंग मी फ्रॉम 0 till 5, 0 till 5, okay। That means I am going to use from 0 to 4,
Okay, that is the usable range. So print list and I index. तो ये क्या करेगा, ये हर एक एलिमेंट के पास जाएगा और प्रिंट करेगा L0, L1, L2, L3, L4. Okay, this is one of the method. Range. There is another method that you can use. Okay, membership operator. Membership operator. Okay, what membership operator you are going to use? In. Okay. So I'll simply say for I in L. I is every element in L. Okay. So for the first time, I is what? 10. उसके बाद I क्या हो जाएगा? 15. I will be 3. I 7, 20. So on so on. ठीक है, तो इस तरह करके आप क्या कर सकते हो, आप लिस्ट के थ्रू इटरेट कर सकते हो. ठीक है, सो लेट्स डू सम ऑपरेशन. चलो प्रैक्टिकली देख लेते हैं इसको. So let's try to work with list. So I have 10, 15, 3, 74, 20. So this is my list. Okay. So if I print L, okay, it will print the entire list. Okay, Tamanna? Okay. When I say I want to print the individual element, so I must use the index number. मुझे क्या यूज करना है? इंडेक्स नंबर. ठीक है, देखो तो L0 is indicating 10. ठीक है, then L3, what will be L3? L3 क्या होगा? 74. Great, 74. Thank you. ठीक है, so this is how you access the list element. ओके, इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना है. अब इटरेशन देखते हैं, लिस्ट को कैसे इटरेट किया जाए. ओके, हाउ टू ट्रैवर्स थ्रू द लिस्ट, हाउ टू रीच एवरी एलिमेंट ऑफ द लिस्ट. ओके, सो नाउ I'll simply use for I in, I'll use the range function. Okay, in range function I must write the length of L. Okay, the range is until a length of L. Now you can simply print, okay, L, that was I. So I is basically going to give the 0, 1, 2, 3 index numbers. Okay, right? When I say L of I, now you see we have reached every element 10, 15, 3, 74, 30. So these are the elements present in list. Okay, there is another way. So for item in L, L is the list, L is the list. So print item. So item is every list, every list member. Okay, in the list L, you can see. Okay, I hope you all are clear. So in list, I have actually what? I have actually added numbers or values according to me. Okay, now let's try to bring in input. We will input data and those data will be added to the list. Yes, Sujan? Okay. Yes, sir. So while using input, okay, while using input, okay, so what you will be doing, Sujan? When you are using input, you can only pass one value. All right. Yes, sir. All the values will be in the form of String. yes, string. So how to create a list? Okay, so list can handle
multiple items at one time. So you can create homogeneous data like we did. You can, okay. So this is the list of string. Okay. Okay. Yes, sir. Then I can create another list. Okay, let's say this is L1, 2, which contains numbers and Tamanna. So this also is allowed in Python. Okay. तो लिस्ट में होमोजीनियस डाटा भी रख सकते हो, हेट्रोजीनियस डाटा भी रख सकते हो. देयर इज नो इशू. ओके सुजन. Yes, sir. ओके आई लव यू. हम तमन्ना फ्लोटिंग ओके. वैल्यू ऐड करेगा. हाँ आर्यन. फ्लोटिंग वैल्यू. हाँ you can put floating value too. No problem, no problem. Okay. So students, now we will learn how to take input of value and add it to a list. Okay. First of all, we will create a empty list. Okay. So this is ls1, the list name. Okay. So it is empty now. It is empty. Totally empty. So I'll be entering 5 values. Okay, Tamanna. How many values? 5 values. So for, okay, you can use index number. So for I in range 5. So my loop is going to work for 5 times. Okay. Now I'll ask for input. A equals to input. So a value will be entered. वो वैल्यू कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है. तमन्ना, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ठीक है. ओके. After getting that input, what I'll do? So Tamanna, A is a variable that is going to take only single input, single value input. Okay. Right? Sir. But I want to add it to a list. List means which can contain more than one value. Okay. So what simply I'll do, there is a function called append, append. Append. Function name is append. Aryan, function name is append. Append will add the list, the value. Append will add a value to the list. Append will add a value to the list. Okay. From the at the end, every time it is going to add the value at the end only. जब भी वो वैल्यू ऐड करेगा लिस्ट में, कहाँ ऐड करेगा? एंड में. ठीक है. So now let's run the program. After running, we will print what? ls1. What is there in ls1? Okay. Everyone. So I'm simply entering 1, 2, 3. Then I have to input to John 4, 5, 6. Here on. Okay. Aditi. The order of input is maintained here because append is actually putting all those value at the end. ठीक है. ओके. ये समझ में आ गया इनपुट कैसे जा रहा है. लिस्ट में हम append फंक्शन यूज करते हैं. append फंक्शन क्या करेगा? लिस्ट के एंड में वो ऐड कर देगा किसी एक वैल्यू को. ओके एवरीवन. तो तमन्ना, फॉर लूप चल रहा है 5 बार इनपुट मांगा और हर एक बार इनपुट देते ही तुम अपेंड कर रहे हो लिस्ट में. यस. व्हाई नॉट डू वन थिंग that I don't now require for loop. I don't require any loop.
from now. What to do? There is something called eval. There is a function called eval. Okay. What is the function? Ajit ji? Eval. Eval function will do what? It will convert the string to primitive type. Okay, Aryan? Okay. यस सर eval क्या करेगा? स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर देगा? इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा. ठीक है? ओके. बट ईवा yes, eval. But remember, the string should be of digits. स्ट्रिंग क्या होना चाहिए? डिजिट होना चाहिए. डिजिट्स. दिस इज द बेसिक थिंग. अगर स्ट्रिंग में डिजिट नहीं है, इफ समवन हैज एंटर्ड अल्फाबेटिकल थिंग और अल्फा न्यूमेरिक थिंग, then there is problem. Okay, Aryan? यस Okay. सर So now let me show you. Okay. Let's say if I say a equals to within single quote. Okay, Aryan? यस सर So when I print the type, how much it is? What it is? यस सर Class string, right? Okay. सर So you know one thing, that you can use int function to convert it into integer, right? Let me give you another option. Okay. Let's say n equals to eval a. ठीक है जी तमन्ना? I am printing n. Sorry, type of n, because n is going to store eval, right, Aryan? हाँ सर Okay. What kind or what type of n is? Now, what eval did? Eval convert the string to primitive type. Tamanna, Kiran, clear? Eval converted the string to primitive type. You can see, clearly you can see. Okay. Eval function converted a. Okay. What is there in a? Inside a, you have a string which contains digits. Anna, clear, beta? Let's work with some alphanumeric. Aryan, okay. So Arya 1, 2, 3. Okay. If I say m equals to eval b. Okay, Aryan, ठीक अच्छी. यस सर नेम कौन कौन जी नेम आर्यन 123 is not defined तमन्ना कृष्णा क्लियर अल्लाह. Yes. So eval will only accept integral value. ठीक है Aryan? यस सर इसलिए सब बुझला था. अनारिता, Yes, sir. क्या समझ में आया बेटा? अना, कि अगर स्ट्रिंग में तुम्हारे डिजिट्स नहीं है, अल्फा न्यूमेरिक है, या फिर पूरा स्ट्रिंग अल्फाबेट से भरा है, उसको इवल फंक्शन में नहीं डालोगे. ठीक है? Yes, sir. ओके. इट विल जनरेट एरर. चला. ओके ना. So students, now let me take the advantage of eval. Okay. ठीक है. So I'll create a list. Okay.
create a list by taking input of a list. Okay, let's say I have a list lst equals to input. Sujan, this is the input, right? Yes, Okay, sir. so that input is going inside eval. किसके अंदर में चला गया? Eval. के अंदर में। फिर मैं क्या करूंगा, मैं प्रिंट कर दूंगा क्या, lst, ठीक है। फिर क्या प्रिंट करेंगे, टाइप प्रिंट करेंगे। ओके सुजन, now Yes. let's run. So I'll simply create a list, suppose 15 comma 87 comma 90 comma 25. Okay, so basically you got a tuple. Sujan, what did you get? Tuple. This is immutable, you cannot change it. Okay, I got a tuple, right? I was expecting list but I got a tuple, right? ये tuple को list में convert करने के लिए there is a list function, एक constructor है list, उसको use करना है, ठीक है सुजन? So simply what you will do, you will put the entire thing inside list, ठीक है, पूरा का पूरा चीज लिस्ट में डाल दो। Yes. अब बताओ, sorry, I have to enter multiple things. Okay, 10 comma 15 comma 89 comma 92. So now lst is of type list. This is how you create a list through input, okay, using eval.